Again, it's getting back to the same zone. Okay. See, now we can see the turnaround and last 3/4, front 3/4. Let's copy this. Let's go into this, paste this, enter. Let's take this, flip, horizontal. Let's position it. And then front. So I think I don't think we need this. Yeah. Right. I think I made some mistake. So now let's go and see our turntable, how it is working. Yeah. View. अच्छा यहाँ पे हमारा let's do like a see. Yeah. Pretty good. मैं just इसको थोड़ा सा scale up करके आपको दिखा रहा हूँ. See, this is pretty much our turntable is ready. अब इसको आप और स्मूथ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ इन बिटवीन ड्रॉइंग्स और उसको और स्मूथ भी कर सकते हैं. अगर हमको इस सेशन में टाइम मिलेगा तो हम लोग ट्राई करेंगे यहीं पे ये करेंगे. बट this guys is very important. Like, let me just pause this. Let me just again go back to our zone. See this, you're almost seeing like a really good animation happening here, right? Right. So let's go down to the expression part. Now ये हो गया आपका मॉडल शीट. इसमें again one more thing I would like to explain is जब हम लोग मॉडल शीट बनाते हैं तो वी मेक इट इन अ चार्ट. तो हम लोग सारे ड्राइंग्स को एक एक लेयर में लाके हम लोग उसको एक्सपोर्ट करके रखते हैं. एंड वी ऑल्सो क्रिएट गाइडलाइंस. गाइडलाइंस आर व्हाट? Guidelines are things that gives your modelers an idea about how where the structure is. Baseline कहाँ पे? Let me just draw this. ये हमारा baseline है. ये हमारा center line है. Proportion of the head. So we always give this suggestion. Torso line, right? Nose का line. All those things are very important for a modeler. अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे this is a 3-head model. 3-head model यानी हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे इस मॉडल को तो ये 3 हेड के साइज का ये मॉडल बन गया हमारा. बहुत सारे लोग इसको डिजाइन करते वक्त ये करते हैं, बट दिस इज वेरी नेचुरली. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत नेचुरली आपके आपके काम में ये दिखाई देगा. ठीक है. तो वी जस्ट क्रिएट दीज गाइडलाइंस. और यहाँ पे हम लोग पॉइंटर्स भी लिखते हैं बहुत सारे. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम लोग कोई कलर कर रहे हैं, लेट मी जस्ट गो, let me just try and color one character for you guys and show you. So let's make his let's give him a yellow color का t-shirt. ठीक. And maybe the t-shirt
is half sleeves, or let's make it full sleeves actually. Let's make it full sleeves. Let's improvise. Then his skin tone, you want to make him slightly fair, slightly in neutral in your neutral in shade. I really love painting organically. जैसे पेपर और पेंसिल पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, I love to paint like that. A lot of people can just take a paint bucket and fill and do this thing, but I really love to paint my character as organically as possible, just like I'm drawing with crayons or pastels. I try to take nice colors. Let's make his eyes nice and bright. Yeah, nice and bright. Let's give him a purple gloves. Again मैं ये बहुत roughly आपको दिखा रहा हूँ, just for your idea. Let's match the gloves with the shoes. And let's make the cape red. Red is a very dominating color. तो आप जब भी red को use करोगे तो make sure you are using it in a right proportion and in the right place. Yeah, and let's go to the skin color again. Let's pick the skin color. Yeah, and with the hair we'll try and keep it dark brown. I think we have a beautiful character here. I think I should use it somewhere. Okay, so cute little nice character we have designed. And here again, I'll just take few more seconds and try and make it slightly more interesting. Yeah. I hope you guys are not getting bored. I hope you guys are enjoying this process as much as I'm enjoying doing it. So let's make it his ears slightly, because the skin of the ear is very thin. Let's give him nice lips, nice blush. Let's add little shine to his gloves. In the model sheet, it's very important to add these small things so that it creates more interest in your. Yeah. Let's add a nice white dot here. Maybe some icon you can put here. See, pretty interesting. And then let's add a little shadow, a little ground shadow. Let's make the red, the cape, slightly darker in certain areas. Because there are shadows everywhere. You have to understand where the shadows fall. Okay. Let's take the skin color. Let's take the skin color. Let's make it slightly. Yeah, pretty good. Now, okay, let's save this. Now let's get on to the other part, the expression part. Oops. Now this is our character. We've saved this character. We'll take this character
will take this character and just 1 second, please. Please hold on. We will take this character and we will add expressions to it. Let's get on to a new file. यहाँ पे मैंने roughly एक file बनाया था. Let's make a new file and I will design few expressions for you guys. Okay, quickly. Now we have very less time. We have very less time, so I'll just try to quickly give you a demonstration of how we can, design expressions. This is our same character. मैं एक roughly एक neutral position पहले बना रहा हूँ इसकी. Okay. Now जब हम लोग कोई चार्ट बनाते हैं, तो हम लोग हमेशा we try to give all the basic expressions to the production designer, जो हमारे मॉडल शीट्स को डिजाइन करेगा, जो हमारे मॉडल शीट्स को क्लीन अप करेगा, जो हमारे मॉडल को 3D मॉडल को एग्जीक्यूट करेगा, उन सब के लिए हम लोग को काफी डिटेल में बनाना पड़ता है. यहाँ पे मैं रफली आपको करके दिखा रहा हूँ एक. So let's start with first basic expression. What is the first basic expression? Happy. So let's clean up this again. Let's try and do a clean job. अब I'm just trying to improvise a little bit here. I think एक आंख थोड़ा सा बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा. And just try to make this. So this is a happy expression. Happy as in neutral smile. You can say neutral smile. Okay. Now, if I want to make a sad expression, let's go into a sad expression. I'll put this off. And if I say sad, or what is the next expression we can do? Okay, let's mix O mouth, surprise, O. Okay, so we have to take the same expression, make the eyes slightly bigger, and you can slightly stretch the expressions. Do not hesitate to explore the stretch and squash of the character. Let's make the eyebrows थोड़ा ऊपर. अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो स्माइल माउथ है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, ओ करके. Now whenever I design a character, I always have a mirror in front of me. मैं सामने मिरर को रख के मैं खुद एक्सप्रेशंस ट्राई करता हूँ मिरर में, to study my own expressions, and then I try to draw it on my character. It really helps. अब यहाँ पे माउथ थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, एंड अगर वो एक साइड पे स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरे साइड पे स्क्वॉश जरूर होगा, बिकॉज द वॉल्यूम हैज टू रिमेन द सेम. So now we go O. Okay. Now let's get on to the next expression, which is, okay, sorry, I just did something wrong. I deleted the expression by mistake. Okay. Now let's get on to the next expression, which can be, let's take super happy expression. यहाँ पे मैं I'm just trying to close the eyes. Eyebrows को हम लोग थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में उसको ये करेंगे, and I will try to make the smile slightly wider. Okay, and
Also, I'll try to squash the ears a little bit. See, so quickly we've got like really good expressions. Now let's add few more small details and see. So neutral, surprise, smile, oh, surprised, oh. Now let's get down to like really angry expression. Let's try a angry expression. अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा है तो उसका expression क्या हो सकता है? So I will try to make the eyes in this angle. यहाँ पे I'm just try to make the teeth. ये वाला expression जो होता है. I wish you guys could see my face right now. I'm really giving expressions when I'm trying to. यहाँ पे दांत जो है हमारे दांत एक दूसरे को दबा के हम अपर टीथ लोअर टीथ we give this expression. हमारे लिप्स थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. And don't be afraid to explore all these expressions. A lot of people think that my drawings will look bad. Don't be afraid to explore. अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप कभी भी उस एक्सट्रीम एक्सप्रेशन को क्रिएट नहीं कर पाओगे. Try and see what you can do with different expressions. See, I've got such a nice expression here. Then I go, oh, smiley expression. Oh, now let's try 2-3 more expressions and then we can get on to the conclusion. Okay. What else can we do? Let's try a sleepy expression. Sleepy. आधी नींद में अगर कोई है तो let's try like a sleepy expression. Half close eyes. दोस्तों यहाँ पे आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है ये बहुत काम आता है. जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं और पार्क में घूम रहे हो और आप देख रहे हो अलग अलग लोगों को, ट्राई एंड स्टडी देयर एक्सप्रेशंस. Try and study what happens when they are giving these different expressions. You will be surprised कि एक ही जगह पे आपको इतना सारा expressions देखने मिलता है. Whenever I am at a airport, yeah, I am stuck in some railway station somewhere, I always try to see and study कैरेक्टर एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पे आंख कान भी है, मैं थोड़ा सा कान को ड्रूपी बना सकता हूँ, उसके कान भी सो गए हैं. You can explore as much as possible. Then his maybe mouth is slightly करके खुल गया है. Jaw line थोड़ा सा नीचे आ गया है. And again I'm just trying to, and then the shoulders can also go down a little bit. Let's try one more and then we'll wrap up. Okay. Can we do a crying expression? Sorry? रोने वाला, crying. हाँ, रोने वाला. Yes. So रोने वाला expression में let's try. That's a good idea. So if somebody is really crying, you can
close the eyes just like the previous expression, keep the mouth slightly up. जब कोई बच्चा रोता है तो है करके रोता है, तो आसमान की तरफ देख के रोता है actually. So you can actually use that as your this thing. And then expression, explore with the mouth, upper teeth दिख रहा है, and then you see the tongue coming out, and you see the entire inside of the mouth. And I always try to create asymmetry. मैं कोई भी चीज को सिमेट्री में ड्रॉ करने की जगह पे आई ट्राई टू क्रिएट एसिमेट्री, जिससे काफी नेचुरल फील आता है आपके ड्राइंग में, आपके कैरेक्टर में. See, and then you can have few typical cartoon droplets coming up. आंसू उड़ रहे हैं उसमें. So you have so many different expressions to explore. टाइम बहुत कम है हमारे पास दोस्तों ये एक्सप्लोर करने के लिए, बट we can do so many things on basis of these fundamentals. So for example, let's rewind and see what we have done till now. We took one character, we really took a basic character, and हमने सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स यूज करके हमने एक टर्न अराउंड हमने क्रिएट किया एक कैरेक्टर का. दिस इज अगेन फॉर द रेफरेंस. इस डिजाइन को, इस फंडे को लेके आप यू कैन टर्न हिम इनटू अ गेमिंग कैरेक्टर who can fly in the sky and kill all the aliens and all this, or you can make him into a IP character. एक सुपर हीरो बच्चा है जो अलग अलग एडवेंचर्स एक्सप्लोर करता है. You can make it into a 2D animation series if you want. Okay, so we explored this, and then we came to expressions. We tried different expressions. यहाँ पे you have to study, like अगर आप इंटरनेट पे जाओ और आप सर्च करो तो आपको बहुत सारे expression charts मिलेंगे. See, you can see so many examples of really good facial expressions. आप इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहिए उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हो. माई इंस्पिरेशन इज ऑलवेज थिंग्स अराउंड मी. मैं ये सोचता हूँ कि क्रिएटिविटी इज ऑलवेज इनसाइड यू, सो यू हैव टू रियली जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर इट एज मच एज पॉसिबल. तो आई ट्राई टू अवॉइड टू गो टू इंटरनेट एज मच एज पॉसिबल, but still whenever required you can use this platform and study these expressions and create these kind of beautiful creations for yourself. So I think with this हम लोग मॉडल शीट में और 2-3 चीजें इंक्लूड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी क्विकली, आई जस्ट टेक 5 minutes, आई विल नॉट टेक too many this thing, but we generally give in the model sheet we also design few character poses. For example, if the character is flying, तो हम लोग कुछ पोजेस ऐसे हम लोग रफली डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग कैरेक्टर के पॉसिबिलिटीज, उसके एनाटॉमी के एक्सप्लोर करते हैं इसमें. और इफ द कैरेक्टर इज jumping in the air, I'm just quickly drawing it. I might go a little off model, but I'm just trying to be as fast as possible. और यहाँ पे आपको your practice of your drawing really helps you create beautiful artworks. So हम लोग इस तरीके के drawings explore करते हैं, and we put that into our model sheet. Okay.
So these kind of yeah, you know, if nothing, then we can just create some sleeping pose of the character. So you can explore so many things. Maybe sad actually, you know. So हम लोग कुछ ऐसे poses भी डिजाइन करते हैं जिसमें मॉडल शीट में मॉडलर्स को भी आइडिया आ जाता है कि ये कैरेक्टर कितना स्ट्रेच कॉश हो सकता है, कितने उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस हो सकते हैं, you know. So we give all these options to our modelers when we design the characters, right? So I hope this session was little helpful for you guys. थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस मिल गया इससे कि आप लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर डिजाइन में हम लोग क्या क्या हम लोग को चीजें जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है. So and if provided, if I had more time, I could have given you a detailed demonstration of every part, but I hope I was of some help to you guys. ये गाइडलाइंस को लेके आप आगे आपके कैरेक्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं. और मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा टू थैंक अरीना एनिमेशन वंस अगेन टू you know, to help me conduct this session.